Hello students of class 12, welcome to my channel. This is Marwadi College computer section, and today we are going to deal with a very interesting topic, that is data communication. What is data communication and why we use the data communication? So past few years it has become clear that world has changed forever. So data communication का मतलब होता है when we pass data from one system to another or one कंट्री टू अनदर कंट्री मीन्स किसी भी डेटा को हम कहीं भी ट्रांसफर कर रहे हैं डिजिटली और एनालॉग के थ्रू भी, दैट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर. सो वी आर नाउ इन इंफॉर्मेशन एज द सेकेंड इंडस्ट्रियल revolution. The first industrial revolution revolutionized the way people work by introducing machines and new organizational forms. So information is a power, information is a tool. So one of challenges in studying data communication and network is that there are many perspectives that we can use. So what is data communication? It is a process of using computing and communication technologies to transfer data from one place to another and vice versa. मतलब डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, that is called data communication. So it enables the movement of electronic or digital data between two or more nodes. Nodes किसे कहा जाता है? जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसे हम लोग नोड्स कहते हैं. Regardless of geographical location, technological medium or data contents. Data communication incorporates several techniques and technologies with the primary objectives of enabling any form of electronic communication. These technologies include telecommunication, computer networking and radio satellite communication. So data communication का मतलब हुआ डेटा का ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं? टेलीकम्युनिकेशन भी है, कंप्यूटर नेटवर्किंग भी है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी है, मीन्स वायर भी है, वायरलेस भी है. सो व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? Electronic transmission of information that has been encoded digitally. So as the storage and processing by computers, sending digital message using communication technology. So communication technology use करके जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है, that is called data communication. Now क्या क्या एलिमेंट्स हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए? क्या क्या एलिमेंट्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले आपके पास मैसेज होना चाहिए जिसको आप सेंड करते हैं, और किसको सेंड करना है और कौन सेंड कर रहा है. मीन्स हु इज द सेंडर, हु इज द रिसीवर. पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, एक सेंडर होना चाहिए जो सेंड करेगा, दूसरा रिसीवर होना चाहिए जो रिसीव करेगा. कोऑपरेटिंग एप्लीकेशंस एट ईच नोड. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मीडियम. ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स चैनल. चैनल मतलब कनेक्टिंग केबल्स. केबल्स के थ्रू हो रहा है या वायरलेस हो रहा है, ये ट्रांसमिशन, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया हम यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स. रूल्स आपका कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. सो सी नेटवर्क इंटरफेस, पहले रूल है, रूल्स किस मैसेज से मैसेज ट्रांसफर किया जा रहा है, चैनल. फिर नेटवर्क इंटरफेस. इंटरफेस मीन्स लिंक. होस्ट है और नोड. होस्ट और नोड. होस्ट, होस्ट मतलब कि जो नोड है, और होस्ट नोड मतलब कि जो सिस्टम आपका यूज हो रहा है. नाउ बेसिक पहला है डेटा सोर्स. बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है? डेटा सोर्स. सो प्रोड्यूस द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड. This busy person is the data source as she talks to the person on the other hand. Second one is transmitter. Encoded the data to be transmitted. In this example, the transmitter is telephone. Next is transmission medium. Telephone cable is the transmission medium.
Next is receiver will decode the transmission back to the original data. The phone is once again the receiver. Destination, the receiver of the information. This person is the receiver. So these are the basic components of data communication. पहले data source, फिर transmitter medium, फिर receiver और last one is destination. Now message, पहला है message. मैसेज क्या है? जो आपका डेटा है. द मैसेज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट कैन take many forms. Example of message: data, program files, snippet of person, conversation, stream of audio, video, voice, etc. Message as byte stream. The meaning of message is established by the protocol recognized by the cooperating application at each node. The message can converted into analog or digital signals for transmission over transcommunication medium. The limitation of use of message as communication tool, varying message length and inefficient utilization of bandwidth. Next is journey of message from source to destination. Home PC, links, converter, internet connection, various converter और wave server. So इसमें Ethernet पैकेट्स है, एनालॉग सिग्नल्स है, ATM है और Ethernet पैकेट्स है. Next is packet. Broken, delimited part of message, a formatted unit of data, basic unit of data communication, makes possible sharing of communication channel for message, consists of data, bits, bytes encapsulated by information about packets, specific data packets, segments, datagram, frame, control message and packets. So why packet is basic unit? The use of packet simplifies operational and increases communication efficiencies. Represents a reasonable unit for routing of data. Packets offer an alternative of dedicated channel for entire message length. It increases the productivity of the communication channel. It enables processing of blocks data all at once instead of a character or byte at a time. It simplifies synchronization of sending and receiving systems. So, payloads versus header. Payloads means user data. Header control information which requires a delivery of user data or payload. Example: source address, destination address, error detection codes like checksum and sequence information. Usually the payload information is found between the header and trailer. So what is node? Node can be any communication device जिसके थ्रू आपका डेटा कम्युनिकेशन जो इसके थ्रू कर रहे हैं वो आपका नोड कहलाता है. PC, smartphone, router, gateway. It can be either source, destination or intermediary. Each node on a network is identified by unique logical address IP address, that is TCP/IP. Node connect the network through interfaces. Now interface. Interface क्या होता है? ये एक interface का मतलब होता है link. So connects node to the network. Each interface is identified by unique physical address, that is MAC address in network interface unit. So a node may have multiple interfaces, multi-homing. Now link, a segment of transmission channel. A LAN or subnet is a link. Devices on same link uses the physical address to identify each other. Devices connected to same link communication at layer 2, that is data link layer. Hub and switches work on link. Now backbones.
बैकबोन का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स. सो बैकबोन इज अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स diverse LAN or subnetwork. A backbone can tie together diverse network in same building, in different building, in a campus environment or over wide areas. So network backbones are designed to maximize the reliability and performance of large scale long distance data communication. WAN backbones typically consist of router and switches connected by fiber optics. Now hub क्या है? hub भी एक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को. So a common connection points for devices in a network, also known as concentrator. A hub is a place where data converges from one or more directions and is forwarded out in one or more direction. Hubs are commonly used to connect segments of a LAN. Hub basically acts as a signal splitter. When a data frame arrives at one port, it is redistributed to all the other ports so that all devices of the LAN can see all frames. Types of hub: active, passive and intelligent. There are three types of hub: active hub, passive hub and intelligent hub. Next, switches. A network switch joins multiple devices together with one LAN, allows different nodes of a network to communicate directly with each other. It receives a message, Ethernet frame, from any devices connected to its input ports and then transmit the message only through that output ports to which the destination device is connected. वन टू वन कनेक्शन होता है स्विचेस में. इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ और न्यू नेटवर्क रिसोर्सेज. नाउ स्विचेस टाइप्स: मैनेज वर्सेस अनमैनेज, लेयर 2 वर्सेस लेयर 3 switches, multi layer switches. These are the types of switches. नाउ हब वर्सेस स्विच, दोनों ही डिवाइसेस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? हब ब्रॉडकास्ट डेटा फ्रेम टू ऑल नोड्स कनेक्टेड टू इट. स्विच, it frames from source node is sent only to the destination node. Hub, in inefficient use of LAN bandwidth. Switch, efficient use of bandwidth macro segments. Hub, half duplex communication. Switch, full duplex communication. Hub unmanaged, switch can be managed. Now hub versus switch, this is the graphical representation. देखिए 1 to 1 सेगमेंट हो रहा है, इसमें होस्ट के साथ किस वे में कनेक्टेड है. Now one more device is bridge. A bridge connects a LAN to another LAN that uses the same protocol. जब सेम प्रोटोकॉल यूज होता है उस समय लैन टू लैन यूज करने के लिए ब्रिजेस का यूज होता है. इट हैज अ पोर्ट कनेक्ट्स टू 2 और मोर सेपरेट लैंड्स. पैकेट्स रिसीव्ड ऑन वन पोर्ट may be retransmitted on another port. Bridges learn which addresses are on which network, can develop a learning table so that subsequent message can be forwarded to the right network. It operates at data link layer. Next one is router. Router is a device or a software in a computer that determines the next network point to which a packet should be forwarded to its destination. It allows different networks to communicate with each other. A router creates and maintains a table of the available routes and the condition and the uses this information along with destination and cost algorithm to determine the best route for a given packets. A packet will travel through the number of network points
with routers giving arrival its destination. So these are the basic components of net data communication technology. That's all from today's video. Thank you. Bye bye.